ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्था कोटि रुद्र संहितायाम् अथ द्वाविंशोऽध्यायः। सूतुवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि श्रूयतामृष्य सत्तमा विश्वेश्वरस्य महात्म्यं महापातकनाशनं यदिदं दृश्यते किञ्चित् जगत्यां वस्तु मात्रकं चिदानन्दस्वरूपं च निर्विकार सनातनं तस्यैव कैवल्य तरोर्द्वितीयेच्छा ततो भवत् स एव सगुणो जाता शिववित्यभिधीयते स एव हि द्विजो जाता पुंस्त्रीरूपप्रभेदतः य पुमान् स शिवः ख्यात स्त्रीशक्ति सा हि कथ्यते चिदानन्दस्वरूपाभ्यां पुरुषावपि निर्मितो अदृष्टाभ्यां तदाताभ्यां स्वभावा मुनिसत्तमा तावददृष्ट्वा तदातो च स्वमात्रपितरो द्विजा महासंशयमापन्नो प्रकृतिपुरुषच्युतो तदा वाणी समुत्पन्ना निर्गुणात् परमात्मना तपश्चैव प्रकर्तव्यं तथा सृष्टिनुष्टिर्नुत्तमा प्रकृतिपुरुषवुच्तु तपस्तु स्थतलं नास्ति कुत्रवाभ्यां प्रबोधुना स्थित्वा तपा प्रकर्तव्यं तव शासनतः शिव ततक्षतेजससारं पञ्चक्रोशात्मकं शुभम् सर्वोपकरणैर्युक्तं सुन्दरं नगरं तथा निर्मार्य प्रेषितं तत्स्वं निर्गुणेन शिवेन च अन्तरिक्षे स्थितं तच्च पुरुषस्य समीपता तदाधिष्ठाय हरिणा सृष्टिकामनया तथा बहुकालं तपस्तप्तं तद्वचनाम वल्लम्ब्य च श्रमेण जलधाराक्ष विविधाक्षा भवंस्तदा ताभिर्व्याप्तं च तच्छून्यं नान्यक्ति चिद्दृश्यत ततक्ष विष्णुना दृष्ट्वा किमेतद् दृश्यते दूतम् इत्याक्षर्य तदा दृष्ट्वा शिरस्य कम्पनं कृतं ततश्च पतिता कर्णामनिश्च पुरतः प्रभो तद्भुव महतीर्थ नामतो मणिकर्णिका जलौघे प्लावय मानस पञ्चक्रोशी यदाभवत् निर्गुणेन शिवेनाशु त्रिशूलेन धृता तदा विष्णुसत्रेव सुष्वाप प्रकृत्या वै स्त्रिया सह तनाभिकमला जातो ब्रह्मशङ्करशासनात् शिवाज्ञां स समासाद्य सृष्टिं चक्रे दुतां तदा चतुष्मिता लोका ब्रह्माण्डे यत्र निर्मिता योजनाना च 50,000,000,000 प्रमाणता ब्रह्माण्डस्यैव विस्तारो मुनिभिः परिकीर्तिता ब्रह्माण्डे कर्मणा बद्ध्वा प्राणिनो मा कथं पुनः प्राप्स्यन्तीति विचिन्त्यत पञ्चक्रोशी विमोचिता इयं च शुभदा लोके कर्मनाशकरी मता मोक्षप्रकाशिका काशी ज्ञानधामं सुप्रिया अविमुक्तं स्वयं लिङ्गं स्थापितं परमात्मना न कदाचित् त्वया त्याज्यमिदं क्षेत्रं ममाशकम् इत्युक्त्वा च त्रिशूलात् स्वादवतार्य हर स्वयं मोचयामास भुवने मर्त्यलोके हि काशिकां ब्रह्मनक्षदिने सा हि न विनश्यति निक्षितं तदा शिवस्त्रीशूलेन दधाति मुनश्यच्युतां पुनक्ष ब्राह्मणा सृष्टो कृत्यायां स्थाप्यते द्विजा कर्मणाकर्षणा चैव काशीपति परिपच्यते अविमुक्तेश्वरं लिङ्गं काश्यां तिष्ठति सर्वदा मुक्तिदात्र च लोकानां महापातकीनामपि अन्यत्र प्राप्यते मुक्ति सारूप्यादिर्मुनीश्वरा अत्र प्राप्यते जीवे सायुज्या मुक्तिरुत्तमा येषां कापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसीपुरी पञ्चक्रोशी महापुण्या हत्याकोटिविनाशिनी अमरामरणं सर्वे वाञ्छन्तीह परेचके भुक्तिमुक्तिप्रदा चेषा सर्वदा शङ्करप्रिया ब्रह्म च शलाघते चामुविष्णुसिदाक्ष योगिना
मुन्यक्ष तथैवान्य त्रिलोकस्था जना सदा काशयाक्ष महिमानं वैवक्तुं वर्षशतैरपि शक्नोम्यं न सर्वं हि यथाशक्ति ब्रुवे तथा कैलासस्य पतिर्यो वैहान्तसत्त्वो बहिस्सत्त्मा कलागिर्नामता ख्यातो निर्गुणो गुणवानभव प्रणिपातेर्नैकैषच् वचनं चेदमब्रवीत् रुद्रवाच विश्वेश्वर महेशान त्वदीयोऽस्मि न संशया कृपां कुरु महादेव मयि त्वमसाम्ब आत्मजे स्थातव्यं च सदा तत्र लोकानाहितकाम्यया तारस्य जगन्नाथ प्रार्थयामि जगत्पते सुतवाच अविमुक्तोऽपि दान्तात्मा तं सम्प्रार्थ पुनः पुनः नेत्राश्रूणि प्रमुच्यैव प्रीतप्रोवाच शङ्करम् अविमुक्तवाच देवदेव महादेव कालामय सुभेषज त्वं त्रिलोकपति सत्यं सेवयो ब्रह्मच्युतादिभिः काश्यं पुर्या त्वया देव राजधानी प्रगृहात्मा मया ध्यानतया स्थेयं चिन्तय सुखेतवे मुक्तिदाता भवानेह कामदक्ष न चापरा तस्मात् ममुपकाराय तिष्ठमास हितः सदा जीवन भवा बधेरखिलांस्तारय त्वयं सदाशिव भक्तकार्यं कुरु हर प्रार्थयामि पुनः पुनः सुतवाच इत्येवं प्रथितस्तेन वीक्षणाधेन शङ्करा लोकानामुपकारार्थं तस्थु तत्रापि सर्वराट् यदिनं हि समारभ्य हरकाश्यामुपागत तदारभे च सा काशी सर्वश्रेष्ठतराभवत् इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थकोटिरुद्रसंहितायां विश्वेश्वरमहात्म्ये काश्यं रुद्रगमनवर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः।